A very good morning, children. So today it is 27 January 2021, and yesterday we had a magnificent celebration of Republic Day on the Rajpath. But on the other hand, you know what happened in Delhi last afternoon was also never acceptable, isn't it? So we should try to be good citizen, law abiding citizen, and trust in the leadership. Even if you are opposing something, it should not be hurting or damaging for the others. All right, so we will not go much in detail, it's a debatable thing, but let us try to be good human beings, let us try to be good citizen of this country, because our country India was, is and will be always, it will be the greatest nation, and it should be the greatest nation for us in this world. All right, so let us begin. Today we are going to do the question answers of chapter 15 light, and you also try to be Atmanirbhar, try to do the questions on your own, but for the sake of everyone I'm just going to discuss it, so kindly be ready with your pen, pencil, paper, whatever you are there you have, and start making the notes. All right, so let's begin with the exercise. Fill in the blanks. An image that cannot be obtained on a screen is called a virtual image, right? We cannot obtain a virtual image on the screen. Image formed by a convex what? Dash is always virtual and smaller in size. Image formed by a convex mirror. Answer is mirror, right? An image formed by dash mirror is always of the same size. We see it every day in the morning, and that is the plane mirror, right? So answer C is plane mirror. And then we have D, an image which can be obtained on a screen is called a real image. Always the real images can always be obtained on the screen. Lastly, an image formed by a concave dash cannot be obtained on a screen lens. I have told you, easy way to learn is whatever concave mirror says, that goes for convex lens. Whatever goes for convex mirror, it goes for concave lens. ठीक है, तो opposites होते हैं. We can obtain an enlarged and erect image by a convex mirror. It's false. True and false आप अपने से करिएगा, हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे. This I have told you. Let us move for the match the column. This also you will be able to do it. Do it. Question number 2 and 3 you will be doing on your own. Let us come to state the characteristics of the image formed by a plane mirror. Children, आप इसके 5 points लिखेंगे. There will be 5 points. The image is erect. The image is of the same size. It is a virtual image, right? And it's virtual. It is of the same size. It's erect. And yes, you will write. It is formed at the same distance behind the mirror as the person is standing in front of it. And lastly, 5th point is it shows lateral inversion, means if you are raising your right hand, you will see that your left hand is raised in the mirror. So these are the 5 characteristics of the image formed by the plane mirror. Now question number 5 I have already given you as homework. Find out the letters of English alphabet. आप ABCD लिखिए और खुद से ही टिक करते जाइए. भाई A का लैटरल इन्वर्जन नहीं होगा, A ऐसे ही दिखेगा.
BCDEFGHI दोनों का नहीं होगा, HIJK सबका होगा, M का नहीं होगा, N का होगा, M का लैटरल इन्वर्जन नहीं होगा, O का नहीं होगा, T का नहीं होगा, U का नहीं होगा, V का नहीं होगा, W का नहीं होगा, Y का नहीं होगा. So these are the alphabets जिनका lateral inversion नहीं होगा. We won't be able to see because in the plane mirror they will be looking at these like the same. Okay, let's move further. क्या हो गया? Okay, next is what is a virtual image? Give one situation where a virtual image is formed. The image which cannot be obtained on a screen is known as virtual image. मैं आपको दो एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपको जो सा सही लगे सिचुएशन यू कैन राइट. द फर्स्ट सिचुएशन इज when we see ourselves or any image in the mirror, plain mirror, it is a virtual image, you cannot obtain it on the screen. And second is when we keep any object very close to a concave mirror. Mind it, when we keep any object very close to the concave mirror, and we then in that case also we won't be able to obtain the image on the screen, and hence it is a virtual image, right? Let's move. Yeah, state two differences between a convex and concave lens. बेटा इसमें आपको दो तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा. State two differences by the image formed by these two lenses और इन जनरल, है ना. तो हम जितने पॉइंट्स दोनों को मिलाते हुए लिख सकते हैं. लेट अस राइट दैट कॉन्केव लेंस is thinner in the middle and broader at the ends, whereas convex lens is broader in the middle and tapers at the ends, है ना. TAPERS, tapers at the end. दूसरा आप ये लिख सकते हो कि the concave lens scatters the light, so we call it a diverging lens. ये मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये वाला मैं करा दे रही हूँ, ठीक है. So because concave lens scatters the beam of light, we call it diverging lens. On the other hand, convex lens converges the light, so we also called it as converging lens. Let's come to image. With the help of concave lens, we can only make virtual image, whereas with the help of convex lens, we can make both virtual and real images. ठीक है, तो आप ये डिफरेंस लिखिए, और भी आप अपने से एक आध और लिख सकते हो इफ यू वांट टू राइट. और क्या लिख सकते हैं हम लोग, बहुत कुछ लिख सकते हैं. एक तो हो गया वर्चुअली बनती है. हाँ, वी कॉन्वेक्स लेंस में आप लिखिए कि वी कैन मेक अ मैग्निफाइड इमेज with the help of convex lens only. On the other hand, with the help of concave lens, the image is always virtual and very small or diminished in size. So I am repeating it again. One hand I am keeping convex lens, here I am keeping concave lens, right? Convex lens thicker in the middle, tapers towards the end. Concave lens thinner in the middle, broader at the ends. Convex lens converges the light, hence also known as converging lens. Concave lens scatters the light, hence diverging lens. DIVERGING, right? Convex lens can make both real and virtual images. Concave lens can make only virtual images, right?
Convex lens can also make magnifying images or magnified images, whereas the image formed by the concave lens is always very small or diminished, D-I-M-I-N-I-S-H-E-D, diminished in size. 4 डिफरेंसेस आपको दे दिए, 5वां आप दोनों के डायग्राम बना लेना, कॉन्वेक्स लेंस का और कॉन्केव लेंस का, सिंपल डायग्राम्स, 5 पॉइंट्स डिफरेंस हो गए. ओके, नेक्स्ट इज गिव वन यूज ईच ऑफ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर. आई रियली लाइक दिस क्वेश्चन क्योंकि ये हमारी डेली लाइफ में एप्लीकेबल है ना. तो आप देखिए कॉन्केव मिरर को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं. कॉन्केव मिरर मैग्नीफाई करता है ना. तो इट इज यूज्ड बाय द डेंटिस्ट्स, इट इज यूज्ड बाय द डॉक्टर्स, है ना, द थ्रोट स्पेशलिस्ट. तो बेसिकली आप डेंटिस्ट लिख दो, बट अगर आप डॉक्टर्स लिख रहे हो तो भी गलत नहीं है. अगर आप टॉर्चेस एंड हेडलाइट्स लिख रहे हो कार की तो भी गलत नहीं है, राइट. ऑन द अदर हैंड, convex mirror we use in the rear view mirror of the vehicles because it shows a larger area in a smaller mirror. ठीक है. Which type of mirror can form a real image? Convex lens का उल्टा है concave mirror, right? So answer number 9 is concave mirror. Okay. Which type of lens forms always a virtual image? Concave lens. इसके लिए आपको मैं एक तरीका बताऊंगी. आप एक टेबल बनाइए, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस. आपके बुक में टेबल बनी हुई है ना. तो आप एक ऐसी टेबल बनाइए जिसमें आप लिखिए कि किस तरह की इमेज किससे बनती है. सिंपल लिखिए, क्लास 7th है, बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. व्हेन यू विल कम टू क्लास 8th एंड 9th यू विल डेफिनेटली बी ड्रॉइंग दोज इमेजेस की कहाँ पे बन रही है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ है और इमेज की पोजीशन कहाँ है. ये सब आप सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे फिजिक्स में. बट फॉर द टाइम बीइंग आप सिर्फ ये जान लीजिए कि वर्चुअल और रियल कौन बना रहा है, मैग्नीफाइड और डिमिनिश्ड किसकी बन रही है. दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर क्लास 7th. ऑलराइट, लेट अस मूव फॉरवर्ड. वी हैव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आल्सो. अ वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट can be produced by a, क्या होगा आंसर? A virtual image larger than the magnified image. Concave mirror. यही डॉक्टर्स यूज करते हैं. भाई 2 जगह से मैग्निफिकेशन होती है, या तो कॉन्वेक्स लेंस से होती है या कॉन्केव मिरर से होती है. कॉन्वेक्स लेंस यहाँ दिया नहीं है तो ऑब्वियसली द आंसर इज कॉन्केव मिरर. Next question is very interesting. David is observing his image in a plane mirror. The distance between the mirror of his image is 4 meters. If he moves 1 meter towards the mirror, then the distance between David and his image will be C. आपको पता है मिरर से जितनी दूर आप खड़े हैं उतनी ही दूर आपकी इमेज भी खड़ी है, मीन्स द डिस्टेंस एड्स. तो पहले अगर डेविड 4 मीटर पे था तो 4 मीटर इधर, टोटल डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द ऑब्जेक्ट वाज 8 meters. इन दिस क्वेश्चन डेविड मूव्स फॉरवर्ड्स 1 मीटर, तो इमेज भी उधर से 1 मीटर आ जाएगी आगे. 4 - 1 3, 3 + 3 6. द करेक्ट आंसर इज 6. The rear view mirror. Next question. The rear view mirror of a car is a plane mirror. चलिए, और a driver is reversing the car at the speed of 2 meters per second. The driver sees in his rear view mirror the image of a truck parked behind his car. The speed at which the image of the truck appears to approach the driver will be. बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको ध्यान से पढ़ना है.
क्योंकि द रियर व्यू मिरर ऑफ द कार इज अ प्लेन मिरर है। तो प्लेन मिरर के केस में क्या होता है, सेम डिस्टेंस होता है, जितना मिरर के इधर है उतना ही इमेज है मिरर के उस तरफ। तो अगर 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कार आ रही है तो ट्रक भी 2 मीटर की तरफ से आएगी। करेक्ट आंसर विल बी 2 + 2 4 meters per second. All right, so children, this is all about the question answers of this chapter. There definitely will be a few extra questions क्योंकि बहुत important part हम लोगों ने इसका छुआ ही नहीं है आपकी back exercises में, that is dispersion of light है ना। I told you white light gets split into 7 colors. That is why we see 7 colors in the rainbow in the Vibgyor pattern. So extra questions will be done on the next turn. And today you try to complete this work neatly and nicely. Any doubts, please ask in the comment section. I am definitely going to reply you back. All right. Thank you very much. Have a nice day.